Hello students, today we are going to start with chapter 4 quadratic equations. So first of all we define equation. ठीक है, लेकिन equation define करने से भी पहले हम एक चीज define करते हैं polynomials. What are polynomials? Polynomials, expressions with one or more terms are called polynomials. ठीक है, ऐसे expressions जिसमें एक या एक से ज्यादा terms हो, they are called polynomials. Example is x plus 2 or x square plus 2x plus 3 और x cube plus 2x cube minus 3x plus 4 and so on. ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं. Expressions which have one or more terms are called polynomials. Now, second is equation. What is an equation? Equation is when a polynomial is equated to 0, it forms an equation. ठीक है, जब हम किसी polynomial को 0 से equate करते हैं, then it forms an equation. तो अगर ये हमारे पास polynomials हैं, तो इनको 0 से equate कर लेते हैं. x plus 2 equals to 0, x square plus 2x plus 3 equals to 0 और x cube plus 2x cube minus 3x plus 4 equals to 0. ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हो गई? इक्वेशन. डिफरेंस क्या है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में? वी कैन फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स बट वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, पॉलिनोमियल्स को तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में हम रूट्स या वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये तो हो गई इक्वेशन. अब हमें पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या अगर हम पहले बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो उनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी उसी से रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड है. इक्वेशंस विद डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Example is x square minus 3 equals to 0 or x square plus 2x minus 4 equals to 0, 2x square plus 4x plus 1 equals to 0. ठीक है, अब डिग्री क्या होगी? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल और एन इक्वेशन. ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल देखें तो वेरिएबल क्या है? x. इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 2. तो डिग्री 2 हो गई, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस सेकंड एग्जांपल में भी देखते हैं, तो वेरिएबल क्या है? x, यहां पे पावर है 1, यहां 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2. अगर डिग्री 2 है किसी इक्वेशन की, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशंस विद डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नेक्स्ट इज general form of quadratic equation. General form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इसी टाइप से होगी, इसी फॉर्म में होगी. ax square plus bx plus c equals to 0, where
A is coefficient of x square, B coefficient of x, and C कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए तो क्या है यहां पर, a is coefficient of x square, b coefficient of x, and c constant term, and a, b and c are real numbers। a, b, c ये क्या हो सकते हैं, ये सब रियल नंबर्स होंगे, एंड a is not equals to 0। a b c में से a b c रियल नंबर्स तो होंगे, लेकिन a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। why a is not equals to 0? क्योंकि a इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर हम a जीरो रख दें यहां पर तो a x स्क्वायर ये पूरा जीरो हो गया। अब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी बची, 1। सो दिस इक्वेशन बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे डिग्री 2 होना जरूरी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होना जरूरी है। और अगर हम a इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये लीनियर बन जाएगी। इसलिए a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहां पर 1, -1, √2, √3, √5 कुछ भी, लेकिन 0 नहीं हो सकती। ठीक है, so general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a is coefficient of x square, b coefficient of x, c constant term, a, b and c are real numbers and a is not equals to 0। b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें। ठीक है, हमें कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड completing the square method, third quadratic formula। ठीक है, अब इन तीनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड ये हमें ऑलरेडी आता है, क्लास 8 और 9 में हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी थी। तो फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा कुछ नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है। ठीक है, वहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, या वो मिडिल टर्म स्प्लिट हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, लेकिन ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी बुक में तो ये गिवन है, लेकिन अगर हम सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देखें तो उसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लास्ट ईयर से हटा दिया है। लेकिन उसके बाद भी हमें इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखना है। भले ये बोर्ड में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ गए तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी समझ जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जिसमें किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर हमें जरूर मिलेगा। तो ऐसा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो सकता है कि जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो हम इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तीनों मेथड्स क्या हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है कि हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें चेक करना है वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट।
So first is question number 1. Question number 1. Check whether the following are quadratic equations. First question, x plus 2 whole square is equals to x square minus 2. ठीक है, अब अगर अभी हम इसको देखें तो हमें ऐसा लग रहा है दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमें इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर चेक करना है वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम यहां पर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So x plus 2 whole square is equals to square of x plus 2 into x into 2 plus square of 2 is equals to x square minus 4, x square plus 4x plus 4 is equals to x square minus 4, x square cancel, 4x plus 4 plus 4 equals to 0, 4x plus 8 is equals to 0। अगर इस इक्वेशन की हम डिग्री देखें तो डिग्री कितनी है 1, therefore it is not a quadratic equation। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज x into 2x plus 3 is equals to x square plus 1। क्या कर सकते हैं यहां पे, ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 इसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं LHS साइड पे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये लाइक टर्म्स हो गई, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन कितनी है 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। Question number 3. Question number 3 is x plus 1 whole square is equals to 2 into x minus 3। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a plus b whole square, so a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, x plus 1 whole square, square of x plus 2 into x into 1 plus square of 1 is equal to 2 into x and 2 into minus 3, 2 into x minus 2 into 3, so x square plus 2x plus 1 is equals to 2x minus 6, 2x cancel, x square plus 1 plus 6 equals to 0,
एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 into 3 minus x. So x square minus 2x is equals to -2 into 3 -2 into minus x, -2 into 3 minus minus plus 2 into x. X square minus 2x is equals to -6 plus 2x. X square minus 2x plus 6 equals to 0. X square minus 4x plus 6 equals to 0. Highest power of this equation is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Next is fifth. Question number 5. X minus 2x into x plus 1 is equals to x minus 1 and x plus 3. सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल है, तो हम दोनों बाइनोमियल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, x square cancel, x minus 2x is minus x minus 2, 2x minus 3, minus x minus 2x minus 2 plus 3 equals to 0, minus 3x plus 1 equals to 0. ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, therefore it is not a quadratic equation. Next question, x plus 2 whole cube. Question number 6. X plus 2 whole cube is equals to 2x into x square minus 1. इसमें भी हमें क्या चेक करना है? Whether the given equation is quadratic or not. So a plus b whole cube, a plus b whole cube is equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. A is equals to x, cube of x plus 3 into x square into 2 plus 3 into x into 2 square plus 2 cube is equals to 2x into x square and 2x into minus 1, x square minus 2x into 1, x cube plus 6x square plus square of 2 4, 4 into 3 12x plus 8 is equals to 2x cube minus 2x. ठीक है, अब सारी टर्म्स कहां पे शिफ्ट कर लें? एलएचएस साइड पे ट्रांसपोज कर दें। सो x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम और सिंपलीफाई नहीं कर सकते। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 is x cube minus 4x square, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to x minus 2 whole cube. Identity a minus b whole cube is equals to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So x cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to cube of x minus 3 into x square into 2 plus 3 into x into 2 square minus 2 cube. X cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to x cube 2 into 3 minus 6x square plus square of 2 4 4 into 3 12x minus 8 x cube cancel minus 4x square plus 6x square minus x minus 12x plus 1 plus 8 equals to 0. 2x square minus 13x plus 9 is equals to 0. Highest power 2, therefore it is a quadratic equation. Now you can try these questions. First, check whether the following are quadratic equations or not. So first is 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1. Second, x square plus 3x minus 1 is equals to x plus 3 whole square. Third, 2x minus 1 ये हो गया, ठीक है. नेक्स्ट है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3. फोर्थ, x प्लस 2 होल क्यूब is equals to x cube minus 4. So you have to try these 4 questions and you have to check whether the given equation is quadratic or not. Next question, question number 7. Question number 7. Represent the following situation in the form of a quadratic equation. ठीक है, अब हमें जो सिचुएशन गिवन है हमें उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर. अब यहां हमें अभी इंटीजर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ इस वर्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास. लेट फर्स्ट इंटीजर बी x एंड सेकेंड इंटीजर बी x plus 1. सेकेंड इंटीजर x plus 1 क्यों हुआ,
क्योंकि यहां हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306। सो x into x plus 1 is equals to 306, x into x square plus x equals to 306, x square plus x minus 306 equals to 0 is the required quadratic equation। तो यहां अभी हमें फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इन वर्ड प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, area of rectangle is 528 meter square. The length of the plot in meter is one more than twice its breadth। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन क्या दे रखा है, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x rectangle be x meter and length of rectangle be, length कितनी है, one more than twice its breadth, one more than twice its breadth। तो breadth से breadth के 2 times से one more है, one more than twice its breadth। तो breadth लेंथ कितनी हो गई 2x plus 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया 528 इज इक्वल्स टू x into 2x plus 1। 528 is equals to 2x square plus x और 0 is equals to 2x square plus x minus 528। So 2x square plus x minus 528 equals to 0 is the required quadratic equation। Next, question number 9। Question number 9, Rohan's mother is 26 years older than him। The product of their ages 3 years from now will be 360। We would like to find Rohan's present age। ठीक है, तो हमें रोहन और उसके मदर के एज के बीच में डिफरेंस दे रखा है 26 इयर्स। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years and present age of mother be x plus 26 years। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज रोहन की एज से 26 इयर्स ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। सो आफ्टर 3 इयर्स, after 3 years Rohan's age will be x plus 3 and mother's age will be x plus 26 plus 3 x plus 29 years। 3 साल के बाद रोहन और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट विल बी 360। सो x plus 3 into x plus 3 into x plus 29 is equals to 360।
x into x plus 29 plus 3 into x plus 29 equals to 360. X into x square plus 29x plus 3x plus 9 into 3 27 87 is equals to 360. Now x square plus 29 plus 3 32x plus 87 minus 360 equals to 0. X square plus 32x minus 10 minus 7 3 15 minus 8 7 or 2 equals to 0. So x square plus 32x minus 273 equals to 0 is the required quadratic equation. ठीक है, तो ये हो गए वर्ड प्रॉब्लम्स. तो हमने आज दो टाइप के क्वेश्चंस देखे. पहला, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. ट्राई दीज. First is, a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. At a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more. To cover, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Convert this problem or this situation in a quadratic equation. So you have to try these questions. Thank you.